dear students, myself Vishal Virani, and today we are discuss about the class 12 statistic part 2 and lesson number 1. Lesson number 1, which name is the probability. Okay, so in this chapter today we are discuss about the topic is that random experiment and sample space. Okay, random experiment and sample space. What is the random experiment and what is the sample space? So to understand the random experiment, we are conducting a 3 experiment. First one is that experiment 1. In experiment 1 we are toss a balancing coin. Yes, toss a balancing coin. Any one outcome will be obtained out of 2 possible outcome. Yes, if we toss a balanced coin, then we obtain a 2 possible outcome. Yes, first one is the head and second one is the tail. Okay, so from these 2 possible outcome we will be get only one outcome. Yes, either head or tail. Yes, either head or tail. Clear? Toss a balanced coin. Any one outcome is obtained out of 2 possible outcome. What is the 2 possible? Which is the 2 possible outcome? Head and tail. Yes. Thus, H and T are the only possible outcomes. Yes. H means head and T means tail. Yes. H and T are only possible outcome. Yes. Then, but which of the outcome for experiment of the tossing of a coin? Yes, out of these 2 possible outcome, which outcome will be obtained? We doesn't know. Yes, we doesn't know. But which of the outcome will be obtained among 2 outcomes? Yes, which of the outcomes will be obtained among 2 outcomes can't be said with the certainty before conducting the experiment. Yes, before conducting the experiment we can't say about definitely, about which outcome will be obtained among the possible outcome. Clear? Before conducting the experiment we can't say definitely about that which outcome will be obtained among the possible outcome. Yes, after we performing the experiment we can say that this outcome will be obtained from the possible outcome. Okay, but which of the outcome will be obtained among 2 outcome can't be said with certainty before conducting the experiment. यस, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके पहले हमको पता नहीं चलता है कि कोई भी कोइन है उसको टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा. यस, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद उसके बाद हमको पता चलता है कि हेड आया है कि टेल आया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमको पता नहीं चलता है. क्लियर? सो दिस इज द आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. नाउ वी आर कंडक्टिंग अ सेकंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2. यस, विच विल बी throw a balanced die. Yes, throw a balanced die with 6 faces marked with number 1 2 3 4 5 6 on it. Yes, we throw a balanced die. Yes, and in a balanced die there is a 6 number 1 2 3 4 5 and 6. Okay, note the number appearing on its upper faces. Yes, we are not a number which is appear on upper faces. Okay, then any one outcome. Yes, any one outcome among the 6 possible outcome with 1 2 3 4 5 6 will be obtained. Okay, there is a 6 possible outcome which is 1 2 3 4 5 and 6. Yes, out of these 6 outcomes we will get only one outcome. Yeah, either 1, either 2, either 3, 4 or 5 or 6. Yes, out of these 6 possible outcomes only we get only one outcome. Yes, there are only 6 possible outcome. Yes, there are only 6 possible outcome which is 1 2 3 4 5 and 6.
for this experiment of throwing a die, but which outcome of 6 outcome will be obtained can't be said with certainty before conducting the experiment. Yes, same as a previous case. We can't say definitely about which outcome will be obtained from a possible outcome before performing the experiment. Yes, डाइस पे कौन सा नंबर आएगा, 6 नंबर में से कौन सा नंबर आएगा वो हमको पता नहीं चलेगा कब, एक्सपेरिमेंट करने से पहले। यस, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चलेगा कि 6 नंबर में से 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा नंबर है वो आया है। क्लियर? ओके, नाउ we are conducting a third experiment number 3. Yes, so this experiment is that suppose there is a wheel marked with the 10 number 1 2 3 ... 9. Yes, suppose there is a wheel marked with the 10 number. Yes, एक व्हील है उस पर 10 नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and pointer is kept against its. यस, आपने कसिनो में देखा होगा ना कि एक व्हील है उसको हम रोटेट करते हैं और वो व्हील पे एक पॉइंटर आता है। यस, और हमको पहले से एज्यूम करना होता है कि कौन सा नंबर व्हील पे आएगा। अगर हमारा जो नंबर है वो व्हील पे आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम विनिंग हो जाते हैं। क्लियर? और हमको प्राइज मिलती है। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है। सपोज देयर इज अ व्हील मार्क्ड विथ 10 नंबर 1 to 9 एंड पॉइंटर इज केप्ट अगेंस्ट इट। क्लियर? If this wheel is rotated, yes, if this wheel is rotated with hand, it will be spin and become a stable after some time. Yes, it will be spin and become a stable after some time. Okay, when wheel stop, any one out of number 1 to 9 will be appear against pointer. यस, हमने यहाँ पे जो 10 नंबर लिखे हैं व्हील पे 0 to 9, उसमें से ओनली एक ही नंबर पॉइंटर के सामने आएगा। यस, दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। क्लियर? दिस नंबर इज विनिंग नंबर। यस, जो नंबर पॉइंटर के सामने आता है वो नंबर कौन सा नंबर होता है? विनिंग नंबर, उसको ही प्राइज मिलती है। क्लियर? चलो, देन देयर आर टोटल पॉसिबल आउटकम। यस, देयर इज अ 10 possible outcomes which is 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is our possible outcome. Okay, but before conducting the experiment we can't definitely say about which outcome will be obtained from the possible outcome. Yes, after performing the experiment we can definitely say that this outcome will be obtained from the possible outcome. Clear? Okay, but which of 10 number will be obtained? Yes, 10 में से कौन सा नंबर आएगा वो हमको पता नहीं है। कब? एक्सपेरिमेंट करने से पहले। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चल जाएगा 10 नंबर में से 0 से 9 में से ये नंबर है वो हमारा विनिंग नंबर है। क्लियर? which of the 10 number will be obtained as a winning number can't be said with certainty before conducting the experiment. Clear? So there is a 3 experiment will be performed to understand the random experiment, random experiment. Okay, from this experiment we are conclude that the experiment 1 2 3 are called as a random experiment. Clear? Okay, and from this 3 experiment we are give the definition of the random experiment. Okay, now definition of the random experiment is that the experiment which can be independently repeated under identical condition. Clear? The experiment which can be independently repeated under identical condition. Independently repeated it means कि हमने एक बार कॉइन को टॉस किया है तो उसके ऊपर हेड आया है। क्लियर? अगर हम दूसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं
तो दूसरी बार हम जो टॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट पहली बार जो टॉस किया है उससे कनेक्टेड नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर। अगर हम तीसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं तो तीसरी बार जो रिजल्ट आता है वो प्रीवियस जो रिजल्ट है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है, प्रीवियस हमने जो टॉस किया है उसके रिजल्ट से डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर। द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड all its possible outcomes are known. Yes, all possible outcome are known. Yes, in there is a we are conducting a three experiment and we see that in all experiment we already know the what is the possible outcome. Yes, like as in experiment 1 when we toss a balanced coin, then we know that our possible outcome is that head and tail, head or tail. Yes, head or tail. If we throw a balanced die, then our possible outcome will be 1, 2, 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Yes, clear. Okay, then if we rotate the wheel which is marked with the 10 number 0 to 9, yes, then our possible outcome will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Clear. So we already know about our possible outcomes. Yeah, yes, but we don't know about the which outcome will be obtained from the possible outcome. Yes, we already know about the possible outcome, but we don't know about the which outcome will be obtained from the possible outcome. क्लियर। इसमें यहाँ पे पॉसिबल आउटकम है वो हेड एंड टेल है, लेकिन हेड एंड टेल में से कौन सा आउटकम आएगा वो हमको पता नहीं है। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे इन बैलेंस्ड डाई देयर इज अ 6 पॉसिबल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यस, लेकिन ये 6 आउटकम्स के ये 6 पॉसिबल आउटकम में से कौन सा आउटकम आएगा वो हमको नहीं पता है। ओके, चलो देन इन एक्सपेरिमेंट 3 इफ वी रोटेट द व्हील देन देयर इज अ 10 पॉसिबल आउटकम्स 0 to 9। यस, फ्रॉम 0 to 9 कौन सा आउटकम आएगा वो हमको पहले से पता नहीं है। यस, लेकिन एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमको पता चलेगा कि ये आउटकम आया हुआ है। क्लियर। सो द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड। यस, हमारा जो दूसरा रिजल्ट है वो पहले पे डिपेंड नहीं है। क्लियर। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम आर नोन। यस, पॉसिबल आउटकम आर नोन but which of the outcome will appear can't be predicted. Yes, जो पॉसिबल आउटकम है उसके बारे में हमको पता है, लेकिन पॉसिबल आउटकम में से कौन सा आउटकम आएगा वो हमको पहले से पता नहीं है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। कि हेड आएगा कि टेल आएगा वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ओके, बट विच ऑफ द आउटकम विल अपीयर कांट बी प्रिडिक्टेड। Yes, with certainty, but when before conducting the experiment. Yes, before conducting the experiment it is called as a random experiment. Yes, it is called the random experiments. Now we are discuss about the characteristic of the random experiment. This characteristic of the random experiment is obtained from the definition. It is obtained from the definition. Clear. First one is that it can be independently repeated. Yes, इसकी तो बात हमने ऑलरेडी कही हुई है। Clear. It can be independently repeated under almost identical condition. Yes, यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। क्लियर। ओके, देन सेकंड वन इज दैट all possible outcome of random experiment are known. Yes, ये तो हमको पता है कि possible outcome है वो हमको पहले से पता है। Clear. But जो possible outcome में से जो outcome आएगा वो हमको नहीं पता है। Clear. All possible outcome of random experiment are known, but which of the outcomes will be appear can't be predicted before conducting the experiment.
यस, लेकिन कौन सा आउटकम आएगा वो हमको पहले से पता नहीं है, लेकिन जो भी पॉसिबल आउटकम है वो हमको पहले से पता है। क्लियर? एंड थर्ड वन इज दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू अ सर्टेन आउटकम। यस, रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू अ सर्टेन आउटकम। पहले क्या था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमको पता नहीं था कि कौन सा रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो ये जो इवेंट है वो कैसे इवेंट हो गए, अनसर्टेन इवेंट हो गए। ओके, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको नहीं पता था कि कौन सा आउटकम आएगा। सो एक्सपेरिमेंट करने से पहले इवेंट कौन सी है, अनसर्टेन इवेंट है। यस, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चल गया है कि यही नंबर आया है, हेड ही आया है या तो टेल ही आया है। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमको आउटकम है वो पता चल गया है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको आउटकम क्या आएगा वो पता नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमारी जो इवेंट थी वो कौन सी थी, अनसर्टेन इवेंट थी। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारी जो इवेंट है वो कैसी हो गई है, सर्टेन इवेंट हो गई है। क्लियर? सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कन्वर्ट a uncertain event into a certain event. Clear? So random experiment is convert uncertain event into a certain event. So random experiment result into a certain outcome. Clear? So this is the random experiment. Okay, now we are discuss about the sample space. What is the sample space? सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो सैम्पल स्पेस क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो कोई भी पॉसिबल आउटकम आते हैं उसका सेट ले लो, उसको ये क्या कहते हैं, स्पेस, सैम्पल स्पेस कहते हैं। क्लियर? रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम है उसके सेट को ही क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। क्लियर? तो सैम्पल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called a sample of that random experiment. Clear? The set of all possible outcome of a random experiment is called a sample of that random experiment. Okay, and sample space is denoted by U or S. Yes, sample space is denoted by U or S. And this is the element of sample space. Element of sample space are called a sample point. For example, in random experiment we are conducting a 3 experiment. Yes, and further these 3 experiment will be conducting. Clear? Experiment 1. In the experiment 1 we toss a balance coin. Yes, and there are total 2 possible outcome. Yes, and this is the H and T. H and T means the head and tail. If we toss a balanced coin, then there is a 2 possible outcome, head and tail. Okay, for this random experiment H and T. Yes, then now we have to write down the sample space. Yes, and sample space is denoted by U. So U is equal to H and T. Yes, what is here H and T? H and T is the all possible outcome of this experiment 1. Clear? H and T is the all possible outcome of this experiment 1. Yes, and the set of this all possible outcome, yes, the set of this all possible outcome, it is called as the sample space. Okay, now we write down the samples for sample space for the second experiment number 2. Yes, which is that throw a balanced die. Yes, throw a balanced die with 6 spaces with number 1 2 3 4 5 6 on it. Yes, then in this experiment if we throw a balanced die, then there is a total 6 number of possible outcome. Yes, which one is that? 1 2 3 4 5 and 6. There are total 6 possible outcome for this experiment, and it is 1 2 3 4 5 and 6. Clear? So now we write down the sample space for the experiment number 2. So U is equal to 1 2 3 4 5 and 6. Clear? So it is the set of the total possible outcome.
Yes, set of the all possible outcome. It is called as a sample space. Yes, in experiment 2, possible outcomes will be 6, and which is 1, it is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Now we have to write down the sample space for the experiment number 3. Okay, and experiment number 3 is that to decide the winning number by rotating a wheel mark with a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on it. Okay, now we rotate the wheel, clear, and we mark the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on it. Okay, and there are 10 possible outcome. Yes, there are in this experiment there are 10 possible outcome, and it is the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, number on the wheel marked is that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So that the possible outcome of this experiment 3 is that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So sample space U is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 0 to 9, it is the total possible outcome of the experiment number 3. And set of the total number of possible outcome of the random experiment, it is called as the sample space. Yes, clear? So till now discuss about the what is the sample space from these 3 experiment. Okay, now there is a 2 types of the sample space. First one is the finite sample space, and second one is the infinite sample space. So what is the finite sample space? If a total number of possible outcome in the sample is finite. Yes, if the total number of possible outcome in the sample is finite, then it is called as a finite sample space. सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो हमने जो कोई भी सेट बनाया है पॉसिबल आउटकम का, ये हमने देख सकते हैं कि u इज इक्वल टू h एंड t, u इज इक्वल टू 1 to 6 एंड u इज इक्वल टू 0 to 9. सो u इज द सैंपल स्पेस. यस, एंड दिस इज द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स. यस, तो हमने जो सेट बनाया है पॉसिबल आउटकम का, तो जो सेट है उसका एलिमेंट है, इसका जो सैंपल पॉइंट है वो हम गिन सकते हैं, उसकी गिनती हो सकती है, तो वो सैंपल स्पेस को क्या कहते हैं? फाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं. क्लियर? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल इज फाइनाइट मीन्स गिन सकते हैं, then it is called as a finite sample space. Yes, for example these 3 experiment is the example of the finite sample space. Why? Because in the experiment 1 we can count the sample space number. Yes, how much it will be? We can count the total number of outcome. Yes, in the experiment 1 there is a 2 possible outcomes. Yes, and in experiment 2 there is a 6 possible outcome. Yes, and experiment 3 there is a 10 possible outcomes. Yes, here we can count the possible outcomes 2, 6 or 10. Clear? So this is it is the finite number. So it is called as the finite sample space. So example is that the sample space above all 3 experiment are called as the finite sample space. Okay, this is also finite sample space, it is also finite sample space, and it is also finite sample space because we can count the total possible outcome of this random experiment. Clear? Okay, now we discuss about the infinite sample space. तो जो कोई भी हमारे सैंपल है उसमें जो एलिमेंट है उसके जो सैंपल पॉइंट है उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो वो सैंपल स्पेस को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं. क्लियर? हम गिन नहीं सकते कि सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट है, तो वो सैंपल स्पेस को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं. क्लियर? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सैंपल इज इनफाइनाइट मीन्स के इसकी गिनती नहीं हो सकती है,
then it is called as the infinite sample space. For example, if the life of the bulb, आप बल्ब की लाइफ गिन सकते हो कि कितनी होगी? यस, कोई भी बल्ब है उसकी लाइफ आप गिन नहीं सकते. ओके, हमारे कोई भी कंपनी में जो कोई भी बल्ब का प्रोडक्शन होता है तो उसकी लाइफ आपको गिननी है, तो उसकी लाइफ है वो फिक्स है, उसकी लाइफ आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. अलग अलग बल्ब की लाइफ अलग अलग होगी, डिफरेंट बल्ब की लाइफ डिफरेंट होगी. क्लियर? वो कितनी होगी? 0 से लेके इनफाइनेट तक होगी. कितनी होगी? 0 से लेके इनफाइनेट. 0 मीन्स कि वो बल्ब स्टार्ट ही नहीं होगा, वो बल्ब स्टार्ट ही नहीं होगा. इनफाइनेट मीन्स वो बल्ब चलता ही रहेगा. क्लियर? ओके, चलो. इफ द लाइफ ऑफ बल्ब फ्रॉम अ प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ हावर, then it is a real number. Yes, bulb of life of bulb are in a real number. Yes, it is 0 to infinite. 0 to infinite means it is a real number. Okay, value of L is the life of the bulb. Yes, life of the bulb is denoted by the L. Then the value of L will be 0 or more. Yes, 0 or more means the value of life of bulb is greater than 0. Clear? So there is a infinite possible outcome. Yes, there is a infinite possible outcome. हम यहाँ पे जो सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट है उसकी गिनती नहीं कर सकते. वो कैसे है? इनफाइनेट है. क्लियर? सो देयर इज अ इनफाइनेट पॉसिबल आउटकम. सो वी राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. Yes, then U is equal to L slash L greater than or equal to 0. L is greater than and equal to 0. It means the life of the bulb is 0 hours and more than 0 hours. Clear? And there is a L is belongs to R. L is belongs to R means life of bulb is a real number. Life of bulb is a real number. Clear? Now suppose if the maximum life of electrical bulb is assumed to be 700 hours. Yes, in first we not assume the maximum life of the bulb. Yes, we say that the maximum life of the bulb is infinite. Yes, but if we suppose assume the maximum life of the electric bulb is 700 hours, yes, then we write the sample point for this experiment. Yes, then U is equal to L, then slash L is in between 0 to 700 hours. Yes, life of bulb is in between 0 to 700 hours and L is belongs to R. Yes, here we can also see that L is belongs to R. Then this is also the infinite sample space. Why it is called as also infinite sample space? If we take the maximum life of the bulb is 700. यस 700 से ज़्यादा लाइफ के बल्ब की लाइफ ही नहीं है तो हम उसको इनफाइनेट सैंपल स्पेस क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 और 700 के बीच में भी कितने हैं? इनफाइनेट है. 0 और 700 के बीच में भी कितनी वैल्यू आएगी? इनफाइनेट वैल्यू आएगी क्योंकि L is belongs to R. L is belongs to R. Life of bulb is the real number. Yes, so it is also called as a infinite sample space. Infinite sample space. Okay, write down it. Okay, then keep practicing and we will meet you in next lecture.